DLL। अगर तुम्हारे कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 में steamclient.dll नॉट फाउंड बता रहा है तो डोंट वरी, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसमें से पहला स्टेप विंडोज सिक्योरिटी को टर्न ऑफ करना। तो इसके लिए हमें सर्च पर जाकर लिखना है विंडोज सिक्योरिटी। जो पहला आएगा उसको क्लिक करो, फिर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में, फिर मैनेज सेटिंग में। यहां आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन दिख जाएगा, इसको टर्न ऑफ कर लो। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। अपने गेम का मेन फाइल लोकेशन को ओपन करो, साइड कर लो। ये देखो, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। फिर इसमें जितना भी DLL फाइल्स हैं, इसको कॉपी करके अपने गेम फाइल में पेस्ट कर दो। बस हो गया, अब कुछ नहीं करना, बस अपना गेम को ओपन करो या एंजॉय करो। मैं मिलता हूं किसी और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। They found where I was being held prisoner with a spy satellite. One of them KH-9s. This baby, it shits out a film canister 12 miles up. Then a C-130 comes by, snags it at about 30,000 feet. This was not the digital age. This film had to be processed, analyzed, and delivered, all by hand. Our dog in the fight, this guy named Jonas Savimbi. Target them on the cruise! They got T-62 tanks in support. We need you to take the heat off. Take out the tanks, Hudson! Beginning strafing run. Damn it, I'm taking fire from the ground. Sooner or later, one of them is going to get licked. Nice work, Hudson. There's a couple of MG trucks targeting you. I can't make another pass till you take out those MG trucks. I'm doing it! Trucks are down! You clear, Hudson? Okay, coming around again.
my friend.